If I'm going to focus on what's not going right, मुझे I'll find evidence everywhere. See, इसने इस तरह बात की, इसने नहीं देखा, ये हुआ, ऐसा हुआ. It piles on, negative पे negative पे negative, and then you are left feeling nothing is working in my life. नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आज आपका फिर से स्वागत है. टुडे माय गेस्ट इज स्नेहा शाह. स्नेहा शाह एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एक थेरेपिस्ट है, एक मैरिज काउंसलर है. मतलब कोई भी आपकी दिमाग की चीज़ है. कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है. हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कोई क्राइसिस में फंस जाते हैं, कोई बहुत एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लड़ बैठते हैं लोगों से, काम पे, रिश्तों में. उसको सुलझाती हैं ये. तो उसके लिए मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को डीप टॉक पे लाना ज़रूरी है. आप तो जानते हैं काफ़ी मैं फाउंडर्स वगैरह को लाता हूँ, लेकिन कोई भी इंसान जो आपके माइंड को एक स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपको एक हाई अचीवर बना सकता है, उनको लाना ज़रूरी है. इसके लिए मैं लाया हूँ. और स्नेहा ने एक बुक भी लिखी है, सो यू विल गेट टू नो हर, बट शी विल हेल्प यू अलॉट होपफुली टुडे. शी इज़ ओके विद हिंदी, बट थोड़ी इंग्लिश भी. शी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड मी कि थोड़ी इंग्लिश में बोलूँगी. आई सर इट्स फाइन, सब समझते हैं. सो स्नेहा जी, वेलकम. Thank you so much, Chetan. थैंक यू, आप मेरे शो में आई. और मेरे शो में जो भी ये सुनता है, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ माई चैनल इज़ बी द बेस्ट यू, विच इज़ बेसिकली अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनना. जो मैंने आपकी अभी बुक देखी जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें भी एक पूरा पार्ट है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, राइट. तो वो जब एक ही इंसान लेजी हो सकता है, एक ही इंसान डिसिप्लिन हो जाता है, एक ही इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हो, 3-4 साल बाद कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, ऐसे होता है. तो आपके लिए बी द बेस्ट यू क्या है? मतलब लाइक एक इंसान, जब मैं किसी लोगों को कहता हूँ बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, तो फोन में तो जैसे वर्जन चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहता है. iOS और एंड्रॉयड. व्हाट डज इट मीन लोगों को कहना कि यार बी द बेस्ट यू, हैव अ बेटर वर्जन ऑफ यू? आप उसको कैसे समझते हैं? तो चेतन, क्या होता है ना, हर एक इंसान में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है. सो व्हेन यू सी, पोटेंशियल इज कैपेबिलिटी, जो हमारी रॉ कैपेबिलिटी होती है. लेकिन हमने देखा है दैट मोस्ट ऑफन जो कैपेबिलिटी, जो इंसान का पोटेंशियल होता है, वो परफॉर्मेंस में, बी इट वर्क में, रिलेशनशिप्स में, कोई भी एरिया में पूरी तरह से ये इक्वल नहीं होता. सो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल में हमेशा गैप रह जाता है. एंड एज साइकोलॉजिस्ट हमारा क्वेश्चन यही होता है कि जब पोटेंशियल इतना है तो वो दिख क्यों नहीं आता इन द वे वी आर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत सारी पोटेंशियल है. राइटिंग तो मेरा अब हुआ है, बट आई हैव ऑलवेज बिन अ राइटर इवन एज अ यंगस्टर. या मेरी पोटेंशियल है टू गो आउट एंड स्पीक इन लार्ज ग्रुप्स. मेरी पोटेंशियल है टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ अ वाइफ, अ डॉटर. मेरी पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ माई ओन एक्सप्रेशन एट वर्क. लेकिन अगर मैं अपने आप को पूछूं कि आज की तारीख में मेरी जो पूरी पोटेंशियल है, क्या वो यूटिलाइज हो रही है या नहीं है, एंड माई आंसर इज नो. अगर मैं आपको पूछूं, चेतन, अपना एग्जांपल दे रहे हो आप? हाँ, एब्सोल्युटली. पोटेंशियल पे नहीं हो. बट ये अवेयरनेस है कि ये जो पोटेंशियल इतना है, उसको परफॉर्मेंस में क्यों कन्वर्ट नहीं होता. दो चीज़ें होती है. एक है एक्सटर्नल सिचुएशंस, कि बहुत बार चीज़ें एक्सटर्नल, हमको सपोर्ट नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं मिलते, एक्सपोजर नहीं मिलता. बट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा इंटरनल माइंड. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा फोकस होता है एक्सटर्नल चीज़ों पे कि चीज़ें बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. लेकिन हम बहुत बार एक्सटर्नल चीज़ें नहीं चेंज कर पाते. बट व्हेन वी आर एबल टू फोकस कि मेंटल ब्लॉक्स क्या है, हाउ एम आई थिंकिंग, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा कैपेसिटी टू डील विथ फेलियर क्या है, ये सारी हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ है. अगर वो सॉर्ट आउट होती है तो जितना आप इंटरनल पे काम करो उतना पोटेंशियल बाहर आता है. सो बीइंग द बेस्ट यू इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग दोज इंटरनल लिमिटेशंस. इट्स बेसिकली आपके पोटेंशियल और एक्चुअल लाइफ परफॉर्मेंस को करीब लाना है. एब्सोल्युटली. बीइंग द बेस्ट यू. और आपने लेकिन शुरू में कहा पोटेंशियल सब में होता है. यू बिलीव दैट? एब्सोल्युटली. ट्रिमेंडस पोटेंशियल होता है. कोई छोटे शहर से है, कोई गरीब घर से है, कोई लाइफ में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, बिल दे रहा है. आपको लग रहा है सब में पोटेंशियल है? सब में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है. आप अपनी लाइफ के पूरे, आप 17 साल से ये काम कर रहे हो, इतने लोगों से के साथ का,
you believe everybody has potential. एब्सोल्युटली. एंड इतना पोटेंशियल है कि हमको खुद को पता नहीं है हम कितने केपेबल है चीज़ें करने में. यू नो एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू यू ऑफन विल रियलाइज दैट हमारे पास हम कोई सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमको भी नहीं पता हम कर सकते थे. इट्स लाइक क्राइसिस में हमारा एक अलग तरीके का स्ट्रेंथ बाहर निकल आता है. एंड दैट इज नथिंग बट अ ग्लिम्स ऑफ पोटेंशियल. सो वी ऑल हैव इट. बट द प्रॉब्लम इज अगर हम कंपेयर करें कि मुझे इस तरह का पर्सन बनना है तो मेरा पोटेंशियल इस तरह का है या नहीं, देन यू आर लिमिटिंग इट. जब भी हम अपना यूनिक पोटेंशियल पकड़ लेते हैं ना, इज व्हेन इट्स अमेजिंग. चलिए मैं आपको एग्जांपल, लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल पीपल. शायद वो ऐसे लोग ये देख भी रहे हैं. गाइज अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बार बार मुझसे मत बुलवाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता. बट कर दो तो अच्छा है. यूट्यूब देन बूस्ट सच वीडियोज़ एंड यू नो दीज वीडियोज़ आर मेंट जेन्युइनली टू हेल्प पीपल. तो लेट्स से मैम कि अगर एक स्टूडेंट है, मैं भी ऐसा था, तो एक तुम क्लास में आप पढ़ रहे हो लेकिन आपके मार्क्स ख़राब आ गए. यू गॉट सम 50% 60% एंड सब घर पे अब कह रहे हैं अब यार ये क्या करेगा लड़का, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ये नहीं कुछ कर सकता. या फिर आप मान के चलो कि वो थोड़ा बड़ा है या बड़ी है, कोई लड़की भी हो सकती है, शी हैज़ अ जॉब, ही हैज़ अ जॉब एंड आई मीन इट्स नॉट अ ग्रेट जॉब, दे डोंट लाइक द जॉब और दे आर जस्ट डूइंग इट. कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है. मे बी दे मेक 10,000 रुपीज़ अ मंथ. दे आर नॉट हैप्पी. द लो मार्क्स गाय, वो कैसे कैसे अपनी लाइफ में, आप कह रहे हो कि पहली चीज़ है अवेयरनेस लाओ कि भाई क्या नहीं हो रहा है. हाउ वुड यू स्टार्ट इफ यू हैड अ यंगर ब्रदर और सिस्टर लाइक दैट, आप उनको क्या कहते हैं कि हाउ डू यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना शुरू करो अब, क्या करें अभी? एक चीज़ है ना चेतन, दैट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट हम है ना एक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं और एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली हमको मैसेजेस देती होती. तो अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में है वे देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, वे देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट इनपुट, दैट तुम ये बराबर नहीं कर रहे हो या ये तो घर पे हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड पेरेंट्स का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, दैट इफ़ वी क्रिटिसाइज किड्स आर गोइंग टू बिकम बेटर. बट वो कहीं ना कहीं जाके रजिस्टर होता है. तो वन इज़ क्रिटिसिज्म, दूसरी अगर कंपैरिजन होती है इवन बिटवीन सिबलिंग्स. अभी आप अगर बोलो कि मेरे मेरे मार्क्स इतने नहीं है लेकिन यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर ब्राइट इन योर ओन वे. बट अगर वो सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन है कि ये इस तरह, व्हाई आर यू नॉट लाइक दिस, तू नालायक है. नालायक है, या इनफैक्ट आपकी बुक में विच आई जस्ट कम टू दिस, ये लिखा है आपने कि क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस. एब्सोल्युटली. इट्स दैट बैड. यस, इट्स इमोशनल वायलेंस. पर आपने ही कहा कि क्रिटिसिज्म से लोग इम्प्रूव भी होते हैं कई बार. आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. लेट्स से आई वाज रियली ओवरवेट पहले एंड कोई मुझे कहता था कि तू मोटा है या वो है तो चुपता था. बट अगर मैं सच बोलूं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरे को मन में आया भी कि यार अब बेटर होना है. बट यू आर सेइंग इट्स रियली बैड. Because when you're, if it's like Chetan, your weight, you're overweight, and that's coming in the way of you being your best version, तो motivating है. But Chetan, you're overweight and you are lazy and you are incompetent and when जब भी आप पे labels किए जाते हैं तभी वो criticism बहुत negative impact करता है. Because then criticism becomes you. I'm a bad person. I'm not good enough. I'm not okay. तो जब भी वो थॉट आता है दैट कैन नेवर बी मोटिवेटिंग. इट्स व्हेन देयर इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड देन देयर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. एंड जब भी वो पेरेंट्स से आता है इन टर्म्स ऑफ आप ठीक नहीं हो, आप इनफ नहीं हो, आप गुड इनफ नहीं हो, या आप इसके तरह नहीं हो, देन इट स्टार्ट्स टू रियली अफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम. ऐसे बहुत है. और इंडिया में तो कल्चर है बच्चों को डांट देना, चिल्ला देना, लोगों के सामने क्रिटिसाइज करना, तो कुछ नहीं करता. ये कुछ सिखा दो, बहुत लेजी है, बहुत इनकॉम्पिटेंट है. आपने कैसे केसेस देखे हैं? यू डोंट हैव टू टेक देयर नेम्स एंड यू, आई नो देयर इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट व्हाट हैव यू सीन पीपल लाइक दैट Oh, a lot of time. क्रिटिसिज्म एट होम, एंड उनका क्या इम्पैक्ट हुआ उस पे? मतलब जब भी हमारे वर्कशॉप्स होते हैं तभी एक्चुअली 24 ईयर ओल्ड 25 ईयर ओल्ड जो
यंगस्टर्स हैं, दे आर ओल्ड इनफ नाउ, बट उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं कि हमारे बच्चों को हमको एनरोल करना है आपके वर्कशॉप में, और पूरी लिस्ट दे देते हैं. वो बात नहीं करता, डिसिप्लिन नहीं है, काम बराबर नहीं करता, सो इज नॉट लिसनिंग टू अस, इज वेरी रिबेलियस, तो आप ये सारी चीज़ें ठीक कर दो 2 दिन के वर्कशॉप में. एंड आई एम लाइक बट that's I feel like I often tell them कि आप आ जाओ, तो हम बात कर लेते हैं in terms of what are your expectations, because अगर आप रोज ये बोल रहे हो अपने बच्चों को, it's going to affect their self esteem in a very big way. And next day when they come for the workshop, they come to drop them and they say मैं शाम को आऊंगी तो मुझे बताना कि इसने किस तरह किया पूरे दिन, बात की क्या, did he participate. That's a lot of control and criticism. So you're saying कि पहली बात तो आप जो लोग the question was जो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, मार्क्स नहीं अच्छे, जॉब नहीं अच्छी, द फर्स्ट थिंग दैट रियलाइजेस कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट नर्चरिंग है या एनवायरनमेंट डिसेबलिंग है? बट एक फैक्टर है ना चेतन, दैट वी कांट चेंज अदर पीपल, वी कांट. एनवायरनमेंट कई बार अब आप घर में हो, घर में आपके माँ बाप के अपने स्ट्रेस हैं, वो आप पे चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. दैट्स व्हाई आई मेड दिस चैनल एक्चुअली, कि एटलीस्ट यू कम हियर, यू लिसन टू मी, यू लिसन टू स्नेहा, यू लिसन टू ऑल द अदर पीपल हु कम माय वीडियोस व्हाटएवर. आपको लगेगा यार कोई ना कोई है दुनिया में हु वांट्स मी टू डू वेल, इवन दो आई एम फार अवे, बट यस आई डू वांट यू टू डू वेल. And that's the intention that reaches out to people, Chetan. I think, this is why इस तरह के पॉडकास्ट इतने पॉपुलर है और इतने काम करते हैं, बिकॉज यू प्ले लाइक द मेंटोर whom they are looking for, that authority figure who says कि नहीं, आप में है potential, you have the capacity to be the best version of yourself. So one is the environment that we grow in, which has a very very big role. मुझे लगता है कि हमारे सब में एक कैपेसिटी अब होनी चाहिए, हमको डेवलप करनी चाहिए. आई कॉल दिस, इट्स लाइक हैविंग एन इनविजिबल शील्ड, बिकॉज लोग हमको बहुत सारी चीज़ें देंगे. एंड वेन वी आर यंग, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास वो फिल्टर नहीं होता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है. बट वन पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज ऑल्सो डिसाइडिंग कि हमको क्या अब्जॉर्ब करना है और क्या नहीं करना है. एंड दैट्स अ वेरी बिग स्किल दैट वी ऑल नीड टू डेवलप. तो मैं बहुत बार डिस्क्राइब करती हूँ, इट्स लाइक हैविंग अ इनविजिबल बबल अराउंड यू. तो लोग बोलेंगे, लेकिन वी नीड टू नो हाउ टू नॉट टेक इट पर्सनली. We need to know that, हमारा protection, हमारा control, हमारा mental stability is in our hands and not in anybody else's hands. So that personal strength can be amazing. How to build that? Just by telling yourself? Absolutely. By I keep telling myself that I am the power in my mental world. And nobody else has the power to affect me unless I choose to give them this power. So this is such an important statement, because we all have a choice to decide what's going to affect us. Also have a support system, Chetan. Unfortunately ना, हम इस पे ना emphasis नहीं देते enough. Family हम choose नहीं कर पाते. They come by default. Bosses हम choose नहीं कर पाते. They come by default. But you can have a couple of people in your life who are your strong support system. So if you had to ask yourself today, ये कौन से 2 या 3 लोग हैं मेरी लाइफ में who are going to be people I fall back on, who are my positive energizers? We all need them. So good support system, a good mentor, being able to develop that power to protect ourselves, these are all very very important skills that we need to have. Okay, interesting. Okay, and then once you पहले अपना थोड़ा आपने सपोर्ट सिस्टम बनाया, फिर देन हाउ डू आई आई एम फीलिंग डिफीटेड, आई एम फीलिंग यार मैं नालायक हूँ, मतलब लोग चाहे लोग बोले ना बोले, मुझे लग रहा है मैं क्लास में नहीं आ रहा, नंबर मेरे आ रहे, या मेरी जॉब मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है, शायद मेरे को नहीं समझ आ रहा कि नेहा ने कहा कि पोटेंशियल सब में होता है, मुझको नहीं लगता मेरे में है. हाउ डू यू चेंज दैट थिंकिंग? एब्सोल्युटली. इसमें है ना, दिस इज वेयर द बुक चेतन व्हाट शेप आर यू प्लेज अ बिग रोल. बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे आर टाइप ऑफ पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. Okay, so I will take a pause here. It's your book. So guys, I have a cover of this book. ये आ रही है अभी, है ना? आ रही है. It's going to be in Feb. Okay. And So this is a book. yeah, that's my book. And it says discover who you really are
and how to handle everyone who isn't like you. Okay, so I have read the book. It's about shapes, and you basically said कि people are different shapes. In personality को shape में बना दिया एक तरह से. Absolutely. It's a simplified way of looking at things, I think. कि square is people who are very organized, circle are people who are very emotional, things like that. Do you want to talk about it? क्या है ये book? तो ये शेप ये क्या इंट्रोड्यूस करता है इज दैट यू अंडरस्टैंड पीपल एवरीबडी इन योर लाइफ यूजिंग 5 geometric shapes. So it's based on shape psychology. So every shape is a type. And I have been through your shape. So just as you read the book, I did a little bit of work or understanding your shape. And you know, Chetan, I'm not surprised at what your dominant shape came out to be. हाँ. Firstly, let's tell people क्या क्या shapes हैं. 5 shapes. 5 shapes. हाँ. There is a box. Box is like a square. A square. Perfect square. Perfect square. Second is a triangle. Triangle, guys. Okay. Third is a circle. Circle. हाँ. Fourth is a squiggle. So squiggle is like a zigzag line. Curve kind of like a free form curve. जो. Absolutely. And then there is a And the fifth one is a rectangle. longer. One side is longer. तो ये आपने स्कूल में मैथ्स क्लास में जरूर पढ़ा होगा, बट यू वुड नेवर एक्सपेक्ट कि ये साइकोलॉजी क्लास में आएगा. Absolutely. And it's very powerful. Okay. So guys, this is the book that's coming. It's available for pre-orders on Amazon. Yes, it's available for pre-orders on Amazon now. It's a very easy read. I read it and it's interesting thoughts. So we'll talk about this more and keep on talking about things that people can do to improve themselves and all the psychological things I think that hold people back. Psychology की वजह से आपको कई बार लाइफ में पीछे होते हो सिर्फ इसलिए कि आपके ब्रेन की वायरिंग अगर वैसे बोला जाए वो थोड़ी चेंज करनी है. बट या आई जस्ट कीप दिस असाइड. सो Why did I mention the shapes right now? Chetan, is that your dominant shape, अगर देखा जाए through this being the context, you're a squiggle. And dominant squiggle followed by a triangle. Now, squiggles are actually the most creative of all the shapes. Yeah, they don't like anything which is in a structure, which is all about rules and procedures. They are free flowing. They are rebellious. Their thinking is they are ideas people. तो उनको हर एक 5 मिनट हर 10 मिनट में नई आइडिया आती है. And they are very excited about the ideas. They look at the bigger picture. उनको ना creative, stimulating, नई चीज़ें पसंद है. तो अगर आप उनको 9 to 5 वाले जॉब में डालो, a squiggle will not be able to function. क्योंकि they don't believe, they don't like that structure. And squiggles do worse in an academic system, especially Indian academic systems. Because squiggle will not be able to mug, रट्टा नहीं मार सकते हैं, वो वही फ्रेम में नहीं काम कर सकते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, उनको why क्वेश्चन पूछना पसंद है, उनको they want case studies and they want examples and they want to go beyond, उनको conceptually वो सोचते हैं. तो I have a nephew who's a squiggle. Squiggles are very bright, squiggles, triangles, extremely bright, but does so bad at academics because he's too restless. And he says, you know what, I get bored. I don't want to study like that. But as a parent, do I understand that one of my children could be a very structured, organized box? जिसको रूटीन पसंद है, जिसको पता है कि ये मुझे होमवर्क फिनिश करना है, will be the ideal adapted child. And the other child is a squiggle who's just freedom, want to do their own thing. But दोनों का potential completely अलग है. My sense is that if you are a squiggle in a box job, then you're going to be you're going to be burnt out. Because आप वो कर रहे हो जो आपका जो natural potential है वो support नहीं कर पाता. And मैं इतने organizations में काम करती हूँ, Chetan, and I see it all the time. I see that when people try to be someone else, तो वो काम नहीं करता. But when you are yourself, and जब वो आपके काम में, आपके interactions में, आपके passion में, आपके performance में जब वो show करता है, तो उसका impact is another level. पर्सनालिटी होती है. जैसे कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड, कुछ लोगों को बातें करना पसंद है, कुछ को नहीं पसंद,
कई लोगों को अकेले काम करना पसंद है, कईयों को टीम में पसंद। तो यू आर सेइंग कि पहले तो अपने आप को जान लो, एग्जैक्टली हो कौन। एग्जैक्टली और ये जानना हम सीखते नहीं है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के लेंस के थ्रू जानते हैं कि बिकॉज यू सेड दिस अबाउट मी तो शायद मैं ऐसा हूं। आपने नालायक बोला तो मैं नालायक हूँ, और you're saying that I'm lazy, I'm probably lazy, but no, I'm a squiggle. If you feel that you're a black sheep of the family, but I challenge things, so that's my personality. तो हम बहुत बार अपने आप को दूसरों की लेंस के थ्रू देखते हैं, बट हमको खुद को पहचानना है फॉर हु एम आई, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज इट दैट आई एम रियली गोइंग टू बी गुड एट। वो एक डिस्कवरी बहुत अमेजिंग है। So people have to figure out who they are. Sometimes, while we're at it, let's talk of this. Like, kai bar young people, they are not trying to be lazy or indisciplined, but there are too many distractions. Yes. आजकल तो बहुत ज़्यादा, like I just, even for me, like बोर हो रहे हो तो I could, एक ज़माना था, I'm telling you, when in my early years of writing, if I'm getting bored, I don't have like a smartphone in my pocket, right? Right. शायद वो नोकिया वाले थे, वो स्नेक एक गेम होती थी, फाइन, पर वो भी मेरे को कितना खेलोगे स्नेक। सो आई वुड समटाइम्स जस्ट टेक नोट्स ऑन माई, आई हैड अ नोटबुक or something, and I would just scribble some ideas for my next book or something, some scene. Now I open my phone and I just open Instagram and I'll see some reels, for example, or I'll open a YouTube or whatever, and हो गए 10 मिनट टाइम पास हो गया। Absolutely. सो एंड समटाइम्स वो 10 मिनट के 20 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। एंड इन दोज 30 मिनट्स इफ आई हैड डन सम स्टडीज, जो इफ आई हैड अ स्टूडेंट, या इफ आई हैड गॉन फॉर अ रन, दैट 30 मिनट्स इज कैन, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन मेक अ एंटायर मील, यू कैन क्लीन योर रूम, बट 30 मिनट्स पता ही नहीं लगता कहाँ गायब हो जाते हैं। Absolutely. 30 मिनट्स अगर रोज हो रहा है, 2-2 घंटे रोज वेस्ट हो रहे हैं, तो obviously you can't perform to your potential. So how do you view this current culture of phone culture, and if you can call it, and how do you make sure कि you stay away from distractions? हम साइकोलॉजी में बोलते हैं चेतन दैट आज का जनरेशन इज अ ADHD जनरेशन। ADHD क्या है, जरा बता दीजिए। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पूरा जनरेशन इज शॉर्ट ऑन देयर अटेंशन, मतलब कोई भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम तक फोकस ना कर पाना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ होल जनरेशन। ज़्यादा देर फोकस का मतलब है, जैसे अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कोई बुक देख रहे हो या कुछ ऐसे, तो यू जस्ट पुट योर माइंड ओनली ऑन दैट, और इधर उधर माइंड नहीं भाग रहा है। एब्सोल्युटली। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करना ना बहुत अच्छी बात है, तो हम खाना खाते हैं तभी भी हम फ़ोन देख रहे हैं, सो वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। लगता है हम बड़े प्रोडक्टिव हो रहे हैं। हाँ, कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली चेतन वी आर नॉट डिजाइंड फॉर मल्टीटास्किंग। एक्चुअली आवर ब्रेन इज नॉट डिजाइंड फॉर मल्टीटास्किंग। तो इस तरह माइंडफुलनेस क्या है, अभी हम बहुत बातें करते हैं कि हमको कंपनी स्पेशली ट्रेनिंग्स कर रही है कि लोगों को, लीडर्स को माइंडफुल होना ज़रूरी है। माइंडफुलनेस का ये मतलब है कि हम बेसिकली एक चीज़ पे फोकस कर पाए, एक काम करना, एक टाइम पे एक काम। तो दे स्टार्ट विथ हम बॉडी के सेंसेशंस को माइंडफुल हो एंड देन वी फोकस ऑन वन थिंग। तो आइडिया इज दैट हाउ इज इट दैट वी कैन डू वन थिंग एट अ टाइम। मेरे लिए है ना ये कंप्लीटली सेल्फ डिसिप्लिन इशू है चित, दैट इफ वी आर एबल टू डिसाइड कि अभी मुझे है ना ये काम करना है, ये सब आपके लिसनर्स के लिए है कि हमको है ना अपने 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 आप से ये प्रॉमिस करना है, नेक्स्ट 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू कीप एवरीथिंग अवे एंड फोकस ऑन दिस वन टास्क, एंड 30 मिनट्स लेटर आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड माई सेल्फ बाय डूइंग 15 मिनट्स ऑफ समथिंग दैट आई रियली लव। और वो जो 30 मिनट्स आप अपने आप को प्रॉमिस करते हो, डेडिकेट करते हो, टाइमर लगा दो चाहिए तो, बट वेन यू डू दैट योर प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली पीक्स, बट अगर हम अपने आप को ना करें, डिसाइड ना करें, then you have many things that you can get distracted with, but it's a self discipline issue that you need to create a habit of these pockets of 30 minutes. let's say so is it okay, let's say I have to study for my physics exam, तो मैं 30 minutes physics करूँगा, लेकिन 30 minutes is a lot if you're doing focused work, so after 30 minutes I'll do 10 minutes of
browsing on my phone. Absolutely. Whatever that, in fact, karna zaruri hai. Especially when you are so focused for that much time, your brain needs to relax. So that's the time when you do whatever you want. Phone I to feel like कि okay, when you want to relax, have true relaxation, and watching this small short content on the phone is not truly relaxing, like playing a sport or listening to music or reading something nice. Your brain actually, something seems wrong about these chote videos, and it just is too much on the brain. It's a lot of stimulation because brain rest nahi kar pata at any point. So you think you're resting, but actually you're not resting. Not because you're constantly consuming information. But क्या है ना चेतन, it's a huge FOMO, fear of missing out. You know कि 30 minutes में पता नहीं दुनिया में क्या हो गया. You know, it's like what has happened, what have I missed, and you know the need to want to go to the phone. But मैंने ये भी देखा है चेतन, a lot of people are now deciding to go on a detox. What is that? Detox is nothing क्योंकि हम Digital addicted. detox. Yeah, because हम addicted है to a phone. So they take a one day, I will not touch my phone detox. And Do you know what that means for the young generation? If I tell the young generation एक दिन खाना नहीं मिलेगा या एक दिन फोन नहीं मिलेगा, खाना छोड़ दो पर फोन चाहिए. डाइटिंग भी हो जाएगी. It's the times we live in, which that shows it's an addiction. It is an addiction. And is it helping you? No form of addiction really helps. So I think challenge लेके कर लो कि एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाएगा. Okay, let's tell people, try this detox challenge. So how does it work? You take your phone, Yes. put it away. Put it away for one entire, I would say start with 2 hours. 2 hours. 2 hours. 2 hours. Start with 2 hours. Keep it somewhere where you can't see it. Okay, but not when you're sleeping at night and say कि अभी दो ना. That's not allowed. Your waking moments, very important. And I feel now that we are at it, the worst thing is to wake up in the morning and pick up your phone. And लोग तो बाथरूम नहीं जा सकते उसके बिना. exactly. So first thing, looking at the phone, bathroom में phone, उठ के phone, coffee पे phone. Other people have also told me it's really bad to do that. In fact, people, I read somewhere that it's better for me when you wake up, 1 घंटे तक no phone. Like basically that whole mindfulness. You wake up, देखो भाई सुबह हुई है, ये मेरे आसपास क्या हो रहा है. Because the moment you open a phone, you're like, your awareness is in this world. You're narrowing your vision, but you're like it's taking you somewhere else only. Yes. तुम्हें आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं. ठंड है, क्या है. कोई sensation ही नहीं है about anything. But you know what, Chetan? A lot of times people make this suggestion, but they don't tell you psychologically why it is important. क्यों नहीं देखना सुबह उठते ही? Because जो हमारा first 1 hour है in the morning, we actually subconsciously set the intention for the rest of the day. तो हमारा जो 1 घंटा जो सुबह का होता है, in fact the first 30 minutes will influence the quality of the entire day. Give examples like what can be a good day and what can be a bad day example. So let's say that I saw on the phone, मैं Instagram में गई and I saw somebody partied last night and had a very good time. बहुत सारे friends थे, मुझे नहीं बुलाया, बहुत मजा किया, went to this new place, all of that. First thing मुझे लगा अरे मेरी तो कोई life ही नहीं है, people are doing so many things and look what amazing girl he was with, and then I think about everything that's not working in my life and I don't have money and these are the limitations. So see the thoughts which are running in my head about all that is not okay, about things that are not working well. इसका ये अच्छा चल रहा है, उसका वो अच्छा चल रहा है, इसका फिगर देख लो, उसके कपड़े देख लो, इसका ट्रैवल देख लो. You're seeing all of that. Then you're also reading about. और मेरी लाइफ झंडा है. Absolutely. क्योंकि इंस्टा पे पिक्चर परफेक्ट लाइफ है. और पिक्चर परफेक्ट इसलिए होते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, जब मतलब ऑनेस्टली मैं तो कोई इतना मॉडल भी नहीं हूँ, पर जब मैं भी अपनी फोटो लगाता हूँ तो मैं 5-6 लेता हूँ, जो बेस्ट है वही लगा रहा हूँ ना. एंड वो भी फिल्टर करके कलर सारी चीजें, so you've got your best version out on Insta. Who is writing saying I'm depressed today? Who is saying I failed at something? Nobody's putting anything like that. वो सारी चीजें तो आती है नहीं, तो लगता है मॉडल्स वगैरह अपनी फोटोज लगाती हैं मॉलडीव्स में और ये वो, एक्चुअली अंदर से like they want to write in the caption I'm really hungry. Absolutely. I think they are. Because that's how they're looking like that. I'm really hungry. I'm depressed because I haven't eaten well for the last so long. It is difficult to be that.
I know in the film business I've seen like for some photo shoots, if it's especially a photo shoot in swimwear or something, they will not eat much or very little and no salt, no sugar, nothing for 2 days. 2 days Absolutely. ताकि वो उस दिन फोटो ठीक आए. एंड उस दिन तो ऐसे स्माइल करके ऐसे मजे ले रहे हैं, पर अंदर से तो उनके मन में यही होगा ना कि कोई समोसा दे दे यार. कुछ तो दे दे, like something which tastes good. And when we look at that, तो मेरी feeling क्या होगी as a woman? Look at me, look at my body, see my bulge. ये देखो, so effortlessly perfect. स्माइल कर रही है. कितना ऐसे लगता है naturally रोज इसी तरह उठते हैं, looking like this. But that's not the truth. But imagine what I am going to go through when I look at all of that. That's your morning, Chetan. So imagine the impact. अगर मैं वो उस तरह से मैं उठूं, I'm going to have an irritation on everything around me. क्यों, क्या है ये जिंदगी? क्या है, कुछ नहीं होने वाला. Anyway, things are not going. वही गंदे बॉस की फेस देखनी है, या have go into a place where I don't have friends, I don't have girlfriend, my marks are not good, so on and so forth. पेरेंट्स पे इरिटेशन. इमेजिन तभी आपके पेरेंट कहीं से आए, आपको कुछ बोल दिया. क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह फोन देख रहा है. Exactly. So I'm going to react कि बस आपकी वजह से ही. See, this is what my life is. See what other people are doing. इसे हम बोलते हैं घर घर की कहानी. ये सबके साथ हो रहा है. Exactly. इंडिया से चल रहा है अभी. Exactly. तो बस यही चल रहा है. फिर I go to college, I go somewhere else, wherever I'm going. मेरा focus, what I focus on grows in my experience. तो अगर मेरा फोकस नेगेटिव पे है, आई एम एक्चुअली गोइंग टू जोन इनटू नेगेटिव. आपने हैव यू एक्सपीरियंस दिस कि अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो आपने एक डिसाइड किया मॉडल, यू विल नोटिस दैट आप वही गाड़ी देखोगे रोड पे. So it's like what you think about, often you start noticing in the environment around you. Brain वही दिखाने लगता है. That's also with negative things. If I'm going to focus on what's not going right, I'll find evidence everywhere. See, इसने इस तरह बात की, इसने नहीं देखा, ये हुआ, ऐसा हुआ. It piles on, negative पे negative पे negative, and then you are left feeling nothing is working in my life. So that's but the first 30 minutes, when you discipline it, इसलिए बोला जाता है, I practice this, so I'm not just speaking. Other way. Now, supposing हमने कहा कि हम फोन नहीं देखेंगे, हाँ, तो then how the day can be different and therefore the life can be different. मतलब what would you rather do सुबह उठ के? Absolutely. तो मैं बताती हूँ चेतन, मैं क्या करती हूँ consciously, and this is something which I have built because I know it makes a difference in my life, and मैंने देखा है when I don't do it and when I do it, what's the difference in the quality of life. When I wake up in the morning, the first thing that's very, very important when I get up is that I end up expressing a lot of gratitude. Chetan, कितने लोग हैं who woken up on a new day and have a breath? You're breathing. You've got another day that you're alive for. It's a potential. I always get up, I breathe, I say thank you for the new day. This day is going to be the best day with new experiences and a lot of miracles. Just that act of telling myself that is planting a subconscious thought, Chetan. And a lot of people, I see the smile, and the smile could be anything, but I'm telling you, when you subconsciously tell yourself that, you create possibilities in your mind for good experiences, for focusing on that. जिंदगी अच्छी है. अच्छी है. Basically, जो हम उल्टा कह रहे थे कि जिंदगी झंड है, जो आप इंस्टाग्राम खोलते ही आपको 10 मिनट में लगेगा कि आपकी जिंदगी झंड है. And but if you say that life is good, you're breathing, you woke up on a nice bed, right? You have temperature controlled room, Your body is working. भूख लगी है तो खाने मिलेगा, सामने फ्रिज है, कुछ निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आज हाथ पैर चल रहे हैं, yeah, I mean, And life में इतना potential है ना चेतन, that any day, any minute can change your life. When you're open to that life is bringing me wonderful experiences and I'm open to all the possibilities, is when you're putting your best foot forward. एक बात बताओ, आपने तो इतने साल लोगों से मिले हो और लोग आपके पास आते हैं और कई लोग बहुत अमीर भी होते हैं, पैसे भी हैं, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, सब कुछ है उनके पास,
और जो आप कह रहे हो एक्चुअली काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। मैं जान के हम ऐसी चीज़ों पे कह रहे हैं कि कोई इतनी हाई फाई नहीं है कि कुछ ऐसे टाइम पे सोना है, उठना है, फ़ोन नहीं देखना है, थोड़ा सोचना है यार लाइफ अच्छी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। लोग क्यों नहीं रख पाते? डिफेक्ट है हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? यू नो थोड़ी साइकोलॉजी हो जाती है चेतन, लेकिन इसको है ना नेगेटिविटी बायस बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है ना, इट्स हार्ड वायर्ड फॉर नेगेटिविटी मोर देन पॉजिटिविटी। ओह, डिड यू नो दैट? नॉट रियली, नो। तो naturally our brain is trained to look for threats in the environment. सोचो इसमें कितना अमेजिंग सर्वाइवल एडवांटेज है। बिकॉज जब भी एवोल्यूशन था, जब भी हम जंगल्स में रहते थे, वी वर वर्किंग इन केव्स, तो हमको कंटिन्यूअसली देखना था, थोड़ी टेंशन में ही रहना चाहिए, हाँ। अलर्टनेस कि कोई थ्रेट तो नहीं है इन द एनवायरमेंट, either in the form of animal, in the form of people, in the form of anything that's going to cause me any kind of threat of survival. So वो जो हमारा जो attention है, tuning है, is to constantly watch the environment for threat. But over a period of time वो हमारे DNA evolution में आ चुका है, that we'll keep watching for saying, oh okay, does this mean I'm not good enough? Does this mean I'm not going to be successful? Does this mean I'm not going to be happy? Does this mean people are going to reject me? So we keep watching for signs which are going to make us not okay psychologically, because we are hardwired. But हमको क्या करना है is that we need to tell our brain हम जंगल में नहीं हैं, we are safe. मैं तो आई एग्री कि लाइक अगर आप जैसे आप अगर आपकी सजेशन मान ली जाए कि लाइफ तो अच्छी है, सब अच्छा ही होगा, चलो निकल चलते हैं खाना ढूंढने, और पीछे से भालू आके आप पे झपट्टा मार देगा तो आपकी गेम ओवर हो गई। पर अगर आप सोचो कि नहीं भैया खाना लाना है, लेकिन ऐसे नहीं है तो मैं इतना मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं बच के रहना है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब देन यू डोंट हैव, खतरा भी है, मैं मर भी सकता हूँ। सो दैट्स अ नेगेटिव थिंकिंग, बट इट्स काइंड ऑफ नीडेड देयर फॉर सर्वाइवल, विच इज़ वाई इट इज़ देयर इन अस। बट यू थिंक आज की लाइफ में जब आप खाने के लिए आपको सिर्फ फ्रिज खोलना है और गद्दे लगे हुए हैं सोने के लिए, तो देन देयर इज नो नीड फॉर दिस थिंग। To have so much, so which means that I need to consciously keep replacing it. आपको पता है सबसे बड़ा statement that can change everything is I am safe. वाओ, But I am safe. ये बोलना है अपने आप को। जब भी लोग बोलते हैं ना, it changes everything. I am safe. इट्स काइंड ऑफ कनेक्टेड टू ऑल इज वेल। I am telling you that film has that statement all is well. पर हमने कोई साइकोलॉजिकल वे में तो आई एम श्योर जिन्होंने वो ऑल इज वेल इज नॉट फ्रॉम द बुक, दैट्स द सॉन्ग एंड दैट्स द स्क्रिप्ट राइटर्स एंड द लिरिक राइटर्स हु डिड इट, बट आई एम श्योर उन्होंने ऐसे साइकोलॉजिकली नहीं सोचा होगा। But जो पावर है वो स्टेटमेंट में, I have said I'm safe, all is well in my world. I'm safe. Unsafe. People feel unsafe, you feel? All the time. Psychologically unsafe. मतलब साइकोलॉजिकली हमको थ्रेटेंड लगता है चीज़ों से, थ्रेटेंड लगता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, फेलियर हो जाएगा, वी विल नॉट बी गुड इनफ, हम एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये सारी हमारी बहुत बहुत नेचुरल हमारे फियर्स हैं। I've had it, मतलब I mean and I used to feel like जितना मेरे को फेम आया, जितने मेरे बुक्स चले, जितना मूवीज आई है, वो अरे अगर अगला फ्लॉप हो गया तो, या अरे अगर लोग मुझे भूल गए तो, या अरे अगर ये सब खत्म हो गया तो, which in a way I was fine even before this, मैं अपना जी रहा था। Exactly. But yeah, and then I was like इतनी अच्छी चीज़ें हैं, but my mind is looking at, it's like Buddha I think said कि ह्यूमन माइंड मतलब एक मिजरेबली सफरिंग इज पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अगर आपके पास नहीं होती कोई चीज़ तो आप सोचते हो काश मुझे वो मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। जब हो जाती है तो लगता है अगर ये कोई ले गया तो। Exactly. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोचते रहते हो काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते। जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, आई हैव नाउ सीन, आई मेट मैनी वेरी वेरी रिच पीपल, दे आर ऑलवेज लाइक थिंकिंग कि ओह अगर चले गए तो, या अगर इसको कैसे संभालेंगे, या फिर अब मेरे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी कंपनी और ग्रो करे, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, It's never enough. वो लगता है कि नहीं यार अगर मैंने मेरे थोड़े भी 10% भी डाउन हो गए सेल्स तो लोग बोलेंगे ये तो फेल हो गया। सो इट्स द ह्यूमन माइंड एट एनी लेवल, इट वर्क्स लाइक दैट। Absolutely. And which is why longing होता है पहले, जो सफरिंग है,
फिर फियर होता है बाद में, मिलने के बाद जो सफरिंग है. बट दोनों चीजें एट द एंड ऑफ द डे, विच इज वाई वी से, यू नो चेतन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हैप्पीनेस और सक्सेस हम बहुत है ना उसको समझ नहीं पाते. अलग चीजें हैं दो. अलग चीजें. तो व्हाट वी फील इज दैट हैप्पीनेस लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ सक्सेस, कि जब भी हम ये अचीव कर ले. एंड इट्स नॉट ओनली इन करियर, इट्स इवन अगर मुझे है ना ये रिलेशनशिप हो जाए, अगर मुझे ये पर्सन मिल जाए, ये पट जाए लड़की, ये पट जाए, यू नो इस तरह, या इस तरह ऐसा घर मिल जाए, ऐसी गाड़ी खरीद लूं, तो यू नो आई एम गोइंग टू बी हैप्पी. And whenever the happiness is on the other side of success, we need to know that success का जो गोल पोस्ट है ना वो बदलते रहता है. तो ये गाड़ी मिल गई तो है, अभी ये ना छोटी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए. यू नो अभी 2 BHK फ्लैट लिया है पर वो 4 BHK फ्लैट चाहिए. यू नो ये जॉब है पर वो प्रमोशन चाहिए. तो whenever we put that, then it's happiness is always out of reach, because success is never a place where I feel I've arrived. And bus abhi, you know, it is done. So the equation has to be the other way around. That I'm happy and therefore I'm successful. Instead of saying that I'm successful and so I'm happy. say that again. I am happy now. Because हर एक चीज जो हो रही है, perfect चीजें हो रही है. Everything is happening for my highest good. Chetan, where you are is perfect for you. Where you're going to go from here is going to be perfect for you. Neither did you plan this, neither do you know what could happen tomorrow, which can be more amazing than what you ever thought of. So it's saying that I'm happy at this moment, this very moment. नहीं मैम, आपको ठीक है, आप ये थ्योरी में बता रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई लड़का देख रहे बोलेगा मैम आप क्या कह रहे हो, इट्स परफेक्ट. ज्योति मेरी गर्लफ्रेंड थी, इतनी प्यारी थी, और मुझे छोड़ के सैंडी के साथ बाइक पे बैठ के चली गई. आप कह रहे हो कि दिस इज़ परफेक्ट. मेरा तो दिल टूट गया है, मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को कुछ नहीं करना लाइफ में, फॉरगेट नॉर्मल लाइफ इज़ हॉरिबल. एंड आप कह रहे हो बोलो परफेक्ट है. लाइक लेट्स से अ ब्रेकअप, और या बिग सेटबैक, इट कुड बी इन स्टडीज, जॉब, व्हाटएवर. जॉब चली गई, ले ऑफ्स हो रहे हैं आजकल बहुत सारे, है ना, और जॉब लग नहीं रही, या मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर ज्योति छोड़ गई, या आदित्य छोड़ गई, या हो सकता है आदित्य को मनोहर छोड़ गया, व्हाटएवर, इट कैन हैपन द अदर वे टू. हाउ डू यू टेल यू, हाउ इज इट गुड फॉर मी अ ब्रेकअप? it's never good in that moment. It is never good, and I'm not even going to say that it's easy. It's not easy. But बहुत ज़रूरी ये समझना कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है. दिस इज चेंजिंग. यू नो ये मोमेंट पे ये बहुत पेनफुल है, बट ये इस तरह नहीं रहने वाला है. यू नो इट्स गोइंग टू चेंज. क्या एविडेंस है कि ज्योति चली गई तो जो नेक्स्ट पर्सन आने वाली है माइट बी much much more amazing than what I could have ever expected in my life. हाँ, मोनिका आ रही है. Monica and Monica is way hotter, way smarter than Jyoti could ever be. See, I mean, she sounds also more happening. I don't know. No. We are not talking of any real life. All fake names, guys. So, but yes. Because how do you know that your next experience? My question to you is, She may be hotter, or she may be more cheerful or whatever, but there is a lot of attachment though ना. But ज्योति से मैम हम true love था ना हमारा ज्योति के साथ, आप क्या बोल रहे हो? वो लगता है. So what is that? What is this attachment we feel to people, you know, to friends, to this, and then they betray us. Friends also, it doesn't have to be a lover. I mean, and then people take it so badly. What is really going on in us? It has never, people are going to be shocked with this statement, but it has never to do with the other person. Really? Never. It is never about Jyoti. It's never about Aditi. It's never about the job. It is about our feeling of being rejected. कि मुझे छोड़ दिया. You know, I wasn't good enough. You know, that person is better enough than me. You know, we'll see a lot of times when breakup होती है ना, तो you stalk your partner. तो आप Instagram पे stalk करते हो. Very common. And देखना क्या होता है कि वो क्या कर रही है? Is she missing me? Is she with somebody else? How is that person? If for a woman, I'm like, is the other girl more pretty than me? So if you look at this, it's always to find an evidence. Did I matter? Was I good enough? मुझे reject किया? Or am I so easy to forget? Do I not
दिस ऑल हम अपना देख It's रहे हैं, about us अपनी रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं. completely कि am I good enough? बट जब खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है ना चेतन, when you know that I am good, that I have wonderful things to offer. If she went, probably it was not meant to be. तो वो जब खुद के भी आप अगर ज्योति 20 साल की है या 18 साल की है, तो आप ज्योति को कैसे पावर दे सकते हो कि अपनी लाइफ का कि भाई ये सर्टिफिकेट देगी कि यू आर गुड इनफ. that's amazing. नहीं कुछ पता, ज्योति खुद नंबर खुद कंफ्यूज है, उसके नंबर नहीं आ रहे, उसके पापा उसे रोज डांट लगाते हैं, कमरा गंदा छोड़ देती है. आपको लग रहा है ज्योति परफेक्शन है. Exactly. Any Jyoti watching this, just a random name we chose. I like the name, but yes, हाँ. तो मतलब yeah, but people, so you're saying जब कोई breakup में mostly, and these are real cases you've seen, you find कि it's not like कि उन्हें ज्योति को मिस कर रहे हैं, they are feeling कि यार हम इतने मतलब हम इतना हमें फेंका जा सकता है, च्युइंगम की तरह चबा के फेंक दिया. Completely. क्योंकि it's about us. हम psychologically loss के साथ deal कर सकते हैं चेतन. We are designed for it. You know, so loss, death, separation, part of life. But वो इतना painful क्यों होता है is when it becomes about me. And वो उतना long last करता है when I keep feeling like, you know, तो अभी मुझे कोई नहीं मिलेगी, मुझे वापस कभी ऐसा फील नहीं होगा. लड़कों को तो बहुत लगता है. देखो लड़कियों को मैम ये एक फ़र्क है, मेरा व्यू है, आई डोंट नो यू कैन एग्री और नॉट एग्री. मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की का ब्रेकअप होता है तो 10 लड़के इतने लुक्खे हैं ना हमारे देश में कि वो 10 लड़के, आर यू ओके बेबी, यू वांट कॉफ़ी, यू वांट टी, एंड वी ऑल नो व्हाट दीज गाइज वांट. बट उसको अकेले, मतलब उसको अकेलापन महसूस ही नहीं होने देते. लड़के को लड़की छोड़ के जाती है तो इतना आसान तो नहीं होता ना एक और मिल जाए. तो उस टाइम मिल ज़रूर जाती है, but at that time I don't know, at least as a guy I can say I don't know how girls feel about breakup, or is there any difference or the same? Very, very different, very painful. Once again, Chetan, because remember, पहले के time पे men were the ones who could have multiple relationships, cave times, and women were the ones who had children. So they had to win a man. How do you win a man? By the way you look, by the way you present, by the way you behave. So when a man goes, a woman feels, oh, was I not good enough? So that other woman got him compared to me. So ये जो conception है ना, ये बहुत बड़ा misconception है. बहुत difficult है. But they may not show it, but very, very difficult. But girls are very good at hiding. Very good at hiding. ये जो आप कह रहे हो ना इंस्टा गेम वो खेलेंगी, वो अगर तोड़ के जाएगी तो वो जानबूझ के ऐसी इंस्टा लगाएगी कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ. या पिट रही होगी. अंदर से सारी फ्रेंड्स को पूछ लो, you know, their life would be miserable with their crying, whining, everything. वाओ, ओके. तो ये याद रखना कि आपको लग रहा है कि आप ही दुखी हो, ज्योति भी दुखी है. बहुत दुखी है. Okay, so it's good. No, why I'm focusing on these breakups is कि at this young age when people have to build their careers, it's a very crucial time. जो भी हमारा education system ऐसा है कि between like whatever 16 to 24 is when you build your academics and career or whatever. उसी time पे relationships happen, उसी time पे breakups happen. Yes. And it can really hit you in a way कि you know, it's not just few weeks. Some people take months, years, lifetime. yeah, to get over from है ना? certain things. Yes, absolutely. That is where I feel like it's important कि ये होगा लाइफ में, जैसे इंस्टाग्राम की तरह उसको कैसे संभालना है, वैसे ये भी होगा, तो इससे कैसे डील करना. सो हाउ कैन आई एज अ पर्सन, जब आपने पहली एक बात बताई बड़ी अच्छी कि ये बात ज्योति की नहीं है या मनोहर की नहीं है, बात तुम्हारी है. तुम यू आर फीलिंग रिजेक्टेड बिकॉज यू फील क्या मैं क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मतलब वही वाली बात है. Exactly. भुला दिया, ऑल द सॉन्ग्स, द होल इंडस्ट्री इज देयर. हाउ कैन आई मेक श्योर कि ये फीलिंग मुझे ना आए एंड आई फील कि मेरी सारी वेदर आई एम वर्थ इट और नॉट की पावर ज्योति के हाथ में ना हो, यू नो, लाइक और इन द हैंड्स ऑफ माई लवर. आई फील गुड माई सेल्फ कि हाँ यार मैं तो कमाल हूँ. Exactly. वो कैसे कर सकते हैं? Love that thing in Jab We Met. You know, movies चीज़ें कर जाती है without even realizing. When Kareena Kapoor says that, you know, मैं अपनी सबसे favorite हूँ. What an amazing statement. You know, that I love myself. You know, I am my most favorite. So I'm not seeking validation. So Jyoti doesn't have to make me feel I'm good. You know, Manohar doesn't have to make me feel like, you know, I am attractive.
बिकॉज आई नो आई एम गुड. एंड वो उसी तरह, बिकॉज रिमेंबर ये लेंस है ना, पेरेंट्स से आ रही है, टीचर्स से आ रही है, नेबर्स से आ रही है, फ्रेंड्स से आ रही है और फिर लवर्स से आ रही है. So all my sense of myself is coming from people around me. That's a big challenge. तो हमको किस तरह करना है is when I'm able to create it. You know, loneliness जब भी आप relationship करते हो ना, you're designed for trouble. कि मेरे लाइफ में ना वैक्यूम है, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, यू नो मैं लोनली हूँ, या आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट आई हैव समबडी विथ मी एंड देयरफॉर आई एम कूल. ट्रबल. Because that's when somebody is filling a vacuum for you, is trying to add to your confidence. तो वो जब चला जाता है तो then you don't know what to do. But when your life is filled with activities that you're doing, you know, things that you're a part of, great friends that you have, when you have a life other than just a relationship adds to that life. It doesn't become that life. They are two very different things. यू नो एक रिलेशनशिप ऐड करता है, पूरी लाइफ नहीं बन जाता. रिलेशनशिप चल भी रहा होता है, ब्रेकअप भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कोई एक जना बहुत क्लिंगी हो जाता है एंड द अदर पर्सन हेट्स इट, एंड नॉर्मली दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड. जहाँ कोई क्लिंगी हुआ बंदा सकिंग एनर्जी, नो, इफ यू कंटिन्यूसली, अगर मेरे पास कोई हो जो कंटिन्यूसली सकिंग माई एनर्जी, सेइंग मैं अच्छा हूँ ना, आई एम गुड इनफ ना, यू नो यू लाइक मी ना, यू लव मी ना, डू यू मिस मी, you know, do you want me? And I have to keep reassuring the person. I'm like, chodo bhai, you know, I don't want to carry a baggage, you know, with me all the time. Yeah, and the people who do that are normally people who have a void in their life, and I think getting a life. So what is getting a life? I often tell boys this, ki you should make muscles, make money. Yes. These are two very simple things. Amazing things. And if you have this, पहली बात, you will gain a lot of self-confidence. When you see in the mirror, you look good. When you know you are financially independent, I guess applies to girls too. You can Absolutely. maybe it's not make muscles, but be fit or whatever. Absolutely. I think girls can also make muscles. There's nothing wrong in that. Be fit, be strong, and be financially independent. Then you feel like, you know, I look good. I have value to add in this world, and then you fundamentally are very confident. And then पहली बात तो ज्योति आ भी जाती है, और अगर चली भी जाती है तो उतना बुरा नहीं लगता. Absolutely. Because वो ज्योति is not become your identity ना. Because you know that okay, ठीक है, for some reasons it didn't work out and it hurts right now. It really hurts. But this is not permanent. ठीक है, you know, I'll get over it and move on and find other things. Let's get into the deeper parts of psychotherapy. These are घर की कहानी, but in certain cases, which is not everybody, people take it very badly. A setback, a failure, a layoff, job cut, failure in an exam, entrance में नहीं होना, or finding it too difficult in college, or having breakups, and they take extreme steps, like permanent steps, which I don't want to say those words here, but people who kind of think that अभी कुछ नहीं हो सकता life में, खत्म, you know, sub, and how, and they also get into depression, which I'd like you to talk ki what is depression and how is it different from कि आज मेरा mood ठीक नहीं है, and how do we make sure that people do not reach that stage? And has it happened? Have you seen people like that in your practice? I can't tell you how many. Many, and I think much more than ever before, Chetan. अभी ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा है. And I'm just feeling that it's very important for youngsters to have the skills to handle this now. Because क्या है ना, loneliness बहुत ज़्यादा है. Virtual connection. Loneliness की, वो तो लोग तो इतनी chatting कर रहे हैं, इतने friends हैं, इतने likes आ रहे हैं, फिर भी lonely है. Because वो deep, meaningful, real, in person है ही नहीं. You know, I am chatting and connecting with images of each other. Everybody is wearing a mask. You know, so what is real, what is not, whether we can really talk about our real issues. Are we meeting? I have spoken to so many youngsters and they say, you know what, we don't share about what we are really feeling. हम तो बहुत बचपन में बात किया करते थे. You know, we used to talk to friends and, you know, have these best friends and हमारे stay-overs होते थे और हम इतनी सारी चीज़ें बात करते थे, बाहर जाते थे, चीज़ें होती थी. Talking now when they have so many means of communication. हम जब छोटे थे तो phone भी नहीं होते थे.
Like तो talking to a friend meant school जाके बात करो या maybe a landline. Distractions, no? Father picking up the extension in the other room. It was so fun. If you had a boyfriend who had to call you, missed call diya, and then it's like. Missed call में caller ID नहीं आता था. So नहीं आता था. Blank calls though was so exciting, then you knew who's calling. So, but right now there are so many distractions, there is so much to do that where is the time? Even when you see youngsters when they are out, 80% of the times they are on their phone. Yeah. The rest 20% they are busy making the right Instagram reels or taking the right photographs. Where is that in the moment experience? Where is the sharing? Group of, I know I have teenage boys, so they are actually very sweet. They're not on social media much. What are you saying? They watch but they don't post, which is because they say our daddy does the posting. ये कैसे पापा है जो अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पे लगाते रहते हैं. But they do watch. I think they do follow Instagram and all that. But what I've seen, I'm not talking of them and their friends, but like I've just seen any group, like you said, 80% of people are consuming the content, 20% are making the content. Apps. Very well said. सब लोग इंस्टाग्राम के लिए लगे हुए हैं काम पे. वो एक प्राइवेट कंपनी है गाइस, मेटा, विच इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर. एंड उसमें या तो आप बना रहे हो उनके लिए, जब मैं एक रील बना रहा हूँ तो मैं उनके लिए फ्री कंटेंट बना रहा हूँ. एंड अगर आप देख रहे हो तो यू आर पार्ट ऑफ देयर एडवर्टाइजर ग्रुप, जो आपको एड्स दिखाएंगे. तो ये हम लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बड़ी कूल चीज़ें कर रहे हैं. We say like we are so cool, this generation is so cool. Actually, if you look from a distance and you see these groups sitting there, and like you said, they are not happy, they are lonely, they don't know what is real. Then how can we not say? Because when I say this, people say, "अरे ये तो बुड्ढे अंकल है, इनको क्या पता हमारी generation इतनी cool है." I'm fine, guys. Do whatever. I am all about new generation. I have always been in touch with new generation, so I don't judge. But अगर आप खुश नहीं हो, and if you're going through pain and you're bordering on depression and things like that, then I have to say कि क्या कर रहे हो? हम तो ऐसे नहीं करते थे. I'm not saying कि हम जो करते थे सही था, but we were not like this, like depressed. Yeah, absolutely. Because connection ही नहीं है, बहुत vacuum है. And how do you handle things alone, no? Feelings are not always handled alone. I love this saying. It says that you hurt alone, but you heal with someone. Wow. You hurt alone, but you heal with someone. It's only when you share the pain, you talk about what's happening. You're able to really connect with someone. You have somebody who's holding you and saying, I understand. ठीक हो जाएगा. Come, I'll give you a hug. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है और ये चेंज नहीं हुआ है. Whether you were born 50 years ago or whether you're born now, human need same ही है. To want to be heard, to want to be understood, to want to be held, ये तो हमारी सबकी natural need है. And if you were to ask, you asked a very important question that how do I know कि ये depression है और ऐसे ही sad mood नहीं है. And ये difference सबको पता होना बहुत ज़रूरी है. Somehow depression के, there are a lot of feelings which are attached to it. Depression meaning I've gone mad, something is wrong with me. It's not. It's like your brain is tired, it's overwhelmed. And it needs help. I love using this formula. There are 3 important things. Frequency. अगर आपका sadness का frequency बहुत high है, which means that you wake up feeling sad, you feel sad multiple times in the day, you sleep feeling very low, very often during the week. So frequency अगर high है, you need to be careful about it. Second is intensity. If the intensity of your sadness, where you don't want to get out of bed, I don't want to talk to anyone, I want to be alone, I don't want to do my regular things, then you know that something is wrong. So frequency, intensity and duration. Duration meaning how long it lasts. So if you are sad continuously for over a week, you need to be concerned. What is happening? So I every time I ask people when they say, oh, I'm feeling anxious. So I say, ऐसे loosely मत use करो. कि अरे मैं depressed हूँ, मैं anxious हूँ. These are not loose words. लोग करते हैं कुछ बात, यार मैं तो depressed हो गया. मैं तो depressed हूँ. And I'm like, but do you understand what is depression? You're low. Low is different from being depressed. So that's when you need to ask yourself, what's the frequency? What's the intensity? What's the duration? And if you are low, I would say, please seek help. If you are sad, you're bordering on depression, it means that आपको किसी professional के support की ज़रूरत है.
And I feel our stomach hurts, we go to a doctor. You know, कोई body की part है जो ठीक नहीं चल रही, we are okay with that. You know, this is hurting, can we take a prescription? Why do we not do that if the mind is not feeling okay? Same thing. It's a part of the body. Okay, that's a very good point. And दवाई लेनी ज़रूरी है या बिना दवाई के भी? Always. Because some of these medicines are also controversial. And अभी कभी study आती है कि they don't work only, or they have huge side effects, and they have all kind of other things. Because depression medication, one of the reasons it's not the same, people doesn't see it the same as a fever or a stomach, is कि आपने fever की दवाई ली चला गया, these depression medications tend to go on for very long time. It's not, it doesn't like fix it एकदम से, मतलब it comes with fixing it plus some side effect. There's something artificial people say about it. So you are saying there is a lot of non-medicinal ways also. Absolutely. Lots of non-medicinal ways. And How? Which are those? whether it's either you go to a psychologist, they are wonderful at supporting you. You could be a part of, there are so many different ways. Art therapy se leke, hypnotherapy se leke, you've got body ways, just go for a massage, talk to someone, see self-care. I say tender, loving care is what your body needs, your mind needs at that time. But I'm a psychologist, so it's always going to come to us, we know what to do. We know how to support you and help you so that you can rework on these kind of thoughts that your mind has got into a loop. How can people reach you, just in case? How to reach you, your social media handles or something? So my social media handle is sneha.isra. Sneha is my name. Isra is the name of my company. And Isra actually means journey in Hebrew, Chetan. So it's ISRA, which means this path. And I was 17 when I decided that I'm going to have a company by the name of ISRA. Kaise hone wala tha, I had no idea. I sat in crossword. Crossword's been I'm a reader. So 5 point someone happened in crossword. So I would be sitting in the Moshe's upstairs and बहुत सारे authors के book launches होते थे. And I would look down and I'm like, मेरी book भी launch होनी चाहिए. बस हो जाएगी एक दिन. And it happened. It's about being able to set an intention. बस करना ही होना ही है. And, life just takes it on. So sneha.isra is my Instagram handle. And people can message me and I can... Not first thing in the morning, because first thing in the morning you should not see Instagram. Absolutely. Absolutely. So it is useful to contact people, but use it properly, guys. Let's talk about anxiety, which is little different. घबराहट जैसे बोलते हैं. Depression versus anxiety, what is the difference? And anxiety का भी कैसे पता कि मुझे anxiety है or I'm just like a normal guy feeling a little bit like that? Anxiety is high level of fear. So if you see, depression is sadness. And sadness hamesha is mostly related to when you look back at things. ये नहीं हुआ या ये बराबर नहीं है या ये this. So it's a lot of sense of regret and sadness. But if you look at anxiety, it's always around fear, around future. What if this doesn't happen? What if this happens? What if I lose this? Ye nahi hua, failure hua. It's like your mind goes into this kind of a very, very overdrive chatter. So it leads to a lot of restlessness, agitation, unable to focus. मैं focus नहीं कर पाती हूँ. बहुत सारे negative thoughts. हम इसको psychology में बोलते हैं catastrophizing, which means imagining that worst से worst चीज़ हो रही है. So that's when you're caught in that entire thing. And if it's very high anxiety, you have a panic attack. Okay, what is that? And panic is almost like a mini heart attack. It's like your body goes into high आपको fight or flight mode के बारे में पता होगा. It's like your body is gone into this overdrive. So it feels like you're getting a heart attack, palpitations, your breathing becomes very shallow, you start sweating, you become breathless, you feel like your blood pressure is dropping. And that's a very physical experience of anxiety. And it needs to be treated. Treated. So how do you treat that? And are there medicinal ways and non-medicinal ways? Both ways. So in non-medicinal ways, we teach people how to do systematic relaxation. So there is a method.
to that entire thing. Then we also do something called as systematic desensitization, especially if you panic with certain things. Some people tend to get a panic attack when they are in closed spaces, when they have to speak in front of public. तो बहुत सारे अलग ways हैं anxiety के. So we actually treat them, so with certain therapeutic methods. But I feel medication also helps, Chetan. So I am of an opinion that, it's like diabetes. जब भी आप, my father-in-law has very, very severe diabetes, but his sugar is not always in control with the exact dose of medication. It is something that's evolving all the time. Similarly, even medication, I feel that people need to see it as, हमको ये ना, we have to find the right medicine, and that takes some trial and error. आपको डोसेज ऊपर नीचे करना है, आपको चेंज करके देखना है, what's going to be the one that works best with your brain. So I feel that before you give up, थोड़ा work with your doctor on the right medication, and it can actually help in a big way. Right. And things like OCD, obsessive compulsive disorder, are they part of anxiety only? Completely. It's an anxiety spectrum. चीज से आपको anxiety है, जैसे बहुत germs है तो मेरे को हाथ धोते रहना है, या I don't know, something will happen to, like I keep on checking the lock of the house or whatever. Absolutely. It's the name says it. If I have obsessive thoughts, obsessive anxious thoughts, I do a compulsive act to control the thought. That's the way the disorder is defined. So it's like obsessive. Doing touch wood. Is that part of OCD? It's because the the thought is what if. So the anxiety is, what if I didn't shut the door? What if वो gas on रह गया? What if it blasts? What if everything burns down? What if, so my brain has gone into an overdrive? So how will I control that? Through a compulsive act, by checking, rechecking, folding, washing, all of that. So the compulsive act is a brain's way of reducing the anxiety, but that itself becomes a problem. But it's not like वो खत्म हो गई, वो थोड़ी temporarily down जाएगी. बढ़ते जाता है. In fact, the more you have to do more compulsive act to reduce the. And how those can also be treated? Yes, those can be treated, but usually medication becomes necessary. And it just gets okay with that. Oh yes, people become wonderfully functioning, very aware. They are able to exercise the control. So I have also seen people really get better. What, in your experience, जो लोग खुश हैं, those who are happy people or successful people, what is their lifestyle like? Of course, these all treatments and all are there, but वो लोग, so that before we leave, you can just give, or maybe I'll just put the question, अलग तरीके से मैं question डालता हूँ. अगर कोई एक खुश सफल जिंदगी जीना चाहता है, how should they live their life? I know it's a very broad question. Broad question, but I'm going to answer it probably in 3 points, Chetan, because we want people to go back. I feel that the first thing is invest in building a relationship with the most important person in your life. And who do you think that would be? Parent, spouse, whatever. This is what people normally feel. And the answer is myself. Oh. Trick question. Yes. Most important, because we always look outward. अपने आप से रिश्ता. अपने आप से रिश्ता, because बाहर के रिश्ते is a reflection of a relationship with myself. When I'm able to build a strong, trusting, loving, friendly relationship with me, who I am, it's like मैं अपना सबसे best friend हूँ. I will always be there for myself. When you build that strength, my relationship with me first before anybody else, then everything in your life can change. So invest in building a relationship with yourself first. That's number one. Number two is know that, the present moment is the only moment there is. So I need to know that this is the moment when I am happiest. It's like Japanese philosophy hai around it. When I accept and I'm happy at this moment that everything is working perfectly, from this experience good will come, this moment is all that I need to focus on, is when again things in life start to change. When I look back,
there is regret, sadness, guilt, all of those emotions. I look forward, fear, anxiety, sense of all of that. So, this moment, how can I be my best version this minute? अभी ही है बेस्ट. अभी आप ये देख रहे हो पॉडकास्ट, आपकी किस्मत में कुछ होगा कि आपने आके आज और आप इस पॉइंट तक आए इतनी लेट तक. ओके, एंड द थर्ड थिंग. And the third thing that I'm going to say is find what you love doing. When you said muscle and money, I feel that, Chetan, we all need to find what we are good at. Because जब हम create करते हैं from what we are good at, we find that thing कि what am I good at? And then do things out of that, it changes the way we perform in life. So find what you're good at, go out, try multiple things. Don't be afraid of failure. Know that every failure brings you closer to what you want to do. I've had multiple failures, Chetan. I've tried multiple careers. And my father's chartered accountant, and he said, what you're doing, and psychology is not something we do. I've had a lot of things that people have told me. I've failed at a lot of things. But I think every failure got me to where I am today. And like you said, there was a time as a teenager I was very depressed, clinically depressed, and suicidal. So today I found my purpose in psychology because I went through that phase. Because I failed, because I couldn't get out of it, and then I learned, and then I discovered, and it gave me a sense of purpose. So being able to find what you're good at and do that. That's very well put indeed. आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट में आने का? Very good. Chetan, I am a fan girl. So I'm serious. So, so it was like, okay, I'm going. I'm going to be talking to Chetan today. So it's been exciting and I've loved being here. थैंक यू. आज कोई फ़ैन वाली बात नहीं है. आज हमें आपसे सीखने को मिला है, विच ट्रूली आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई लव टू लर्न मोर फ्रॉम यू. वी बीन स्पीकिंग फॉर मोर देन एन आवर. एंड अगर आप लोग भी दोस्तों आए हो तो प्लीज़, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ़ यू वांट कि यूट्यूब ये कंटेंट औरों को दिखाए. यूट्यूब पे बहुत उल्टा पुल्टा कंटेंट भी होता है, कोई भी डाल सकता है. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट जाए, और वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब एकदम तड़कता भड़कता हो, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल. So for that, to promote this, you have to like it. You have to engage with this video in any way. चाहे आप like कर सकते हो या comment कर दो तो और अच्छा है. Subscribe कर दो, share कर लो. Any of these things really helps. And this deep talk and my channel can only be supported by you guys. आप लोगों को ही करना है. इसी को गुरु दक्षिणा मान लो कि like करने को कह रहा हूँ, रिश्ता बनाने को नहीं कह रहा. And नेहा जी, थैंक यू सो मच. आप आए, आपने इतनी सेल्फलेसली इतने लोगों को बताया. एंड ये वीडियो जब भी कोई देख रहा है, मेरे को लगता है उसकी किस्मत में तभी आया कि उसको लाइफ में इसकी ज़रूरत थी, तभी जाएगा. और ये यूनिवर्स में हम दे रहे हैं. एंड आई होप दिस इज़ यूजफुल. गाइज, डू गिव योर कमेंट्स. नेहा विल रीड देम ऑल फॉर श्योर. Yes, I will for sure. Absolutely. एंड थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर कमिंग. बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीप टॉक सुनने के लिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. Thank you.